Hello everyone. Can someone please confirm you can see my screen and am I audible? Okay, thank you very much. So today we are going to discuss strategy creation based on stochastic RSI. Okay, so we will see how to create condition based on stochastic in Tradetron. So first we will look how to determine conditions on stochastic RSI. So basically, stochastic RSI is nothing but a momentum indicator or oscillator, we can say. So like this, I have plotted on on a chart. Okay. So in this, what we generally see is whether the stochastic RSI is below this range of 2080. This is the standard range, which is already by default set in stochastic RSI. You can modify this range as per your requirements. But now, for example, we are seeing that whenever we have the two lines in stochastic RSI. Okay, one is this blue line and another one is this red line. So generally, what we generally do when this blue line is crossing, this blue line is nothing but the percent K line, and this red line is basically percent D line, which is nothing but the moving average of percent K. Okay, so like what we do is whenever the percent K line is crossing above the percent D line, so we interpret it as a great buying point. Okay, and whenever the percent K line is crossing below the percent D line, that is nothing but the average of K. Percent D is nothing but average of percent K. So whenever it is falling from above, we consider it as the good selling point in our strategies. I hope you are clear on this. So now we will see how to create it on Tradetron. So as usual, we'll start with the info block. So basically this is strategy info block. Here we have to assign the name of the strategy, assign certain tags to our strategy, and description for our strategy, right? So from here we will start the our strategy creation. Okay, so this is basically set one. Okay, so this is the condition builder of this strategy, and this is the position builder of the strategy. Okay, so we write certain conditions over here, and on satisfying these certain conditions, we take positions accordingly. So यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि conditions कैसे डिजाइन कर सकते हैं stochastic में. So for that, first हम start करेंगे. हम आज देखते हैं कि हम list of stocks पे कैसे बना सकते हैं. So पहले हम एक list ready करेंगे जिसपे हम हमारी conditions check करेंगे stochastic RSI के लिए. ठीक है. So to create a list, यहाँ पर हमें पहले click करना है. Click on add. और लिस्ट का नाम हम रखेंगे स्टॉक आरएसआई. ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सचेंज सिलेक्ट करना है. हम एनएफओ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम एचडीएफसी. ओके, देन वी विल सिलेक्ट रिलायंस. ओके, देन वी विल सिलेक्ट आईसीआईसीआई बैंक and we can select Bajaj Finance. Okay, so like this we can create list and we can save it. Okay, तो यहाँ पर आप देखोगे list created successfully मैसेज अपीयर हो गया. नाउ यहाँ पे हमें अभी लिस्ट को सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक आरएसआई जो हमने अभी लिस्ट क्रिएट किया, यहाँ पर वो विजिबल है, राइट. सो नाउ वी विल क्रिएट कंडीशंस ऑन इट. सो फॉर दैट फर्स्ट हम यहाँ पर ये जो है स्ट्रेटेजी, ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी के लिए हम रेडी कर रहे हैं. यू कैन क्रिएट इट फॉर इंट्राडे एज वेल. सो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन कीवर्ड यूज करेंगे. पोजीशन स्टॉक. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पर दो लाइंस दिख रही है. दिस इज रेड एंड ब्लू लाइन. सो ये जो ब्लू लाइन है ये स्टॉक
के है और ये जो डी लाइन है ये स्टॉक RSI डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्टॉक के ले लेंगे, स्टॉक RSI के। ये जो जीरो है ये जीरो रिप्रेजेंट करता है करंट डे कैंडल को। सो वी विल चेक फॉर -1 दैट इज प्रीवियस कैंडल। ओके, सो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट नेम में लिस्ट यूज करेंगे। तो ये जो हमारी लिस्ट है यहाँ पर हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सो वी विल चेक if the stock RSI K is greater than position of stock RSI D। ठीक है, यानी हम चेक कर रहे हैं कि जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक RSI D, इंस्ट्रूमेंट नेम शुड बी स्टॉक RSI, जो हमारी लिस्ट का नाम है, राइट। सो ये हम चेक कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल पे। प्रीवियस यहाँ पर हमने डे कैंडल सिलेक्ट किया। यू कैन सिलेक्ट इट फॉर 5 मिनट 15 मिनट्स। यहाँ से आप सिंबल में जाकर यहाँ से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, कैंडल टाइम फ्रेम। ओके, तो नाउ फॉर नाउ एग्जांपल पर्पस आई एम टेकिंग इट एज डे। ओके, सो ये तो हमने चेक कर लिया कि अब यहाँ पर स्टॉक RSI के जो है वो डी के ऊपर है या नहीं है। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर चेकिंग फॉर द क्रॉसओवर। So for crossover, we have to verify that the previous to previous, that is -2 candle, the K is less than percent D. So for that, what we will do is we simply copy, paste less than percent D. ठीक है, now we will change this position -1 to -2. Similarly, this one also. ओके, एंड एडिशनल टू दिस व्हाट वी विल चेक इज हम ये चेक करेंगे कि ये जो दोनों लाइंस है ये 20 के नीचे है या नहीं है, राइट। जो ये 20 लाइन आपको दिख रही है, ये जो स्टैंडर्ड लाइन है यहाँ पर, आई विल ओपन दिस सो आपको बेटर आइडिया आएगा। ये जो दिख रहा है आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर ये अपर लिमिट यहाँ पर 80 सिलेक्टेड है और लोअर लिमिट 20 सिलेक्टेड है, राइट। तो हम चेक करेंगे कि दोनों जो लाइंस है वो 20 के नीचे थे या नहीं थे। So to get a better we can say buying opportunity in the market, so यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर ये तो चेक कर लिया ये दोनों कंडीशन से कि परसेंट के जो है वो परसेंट डी के ऊपर है या नहीं है, राइट। बट अब यहाँ पर हम चेक करें कि जो दोनों लाइंस है, जो प्रीवियस जो भी अपने प्रीवियस कैंडल्स के जो भी लाइंस है दोनों, वो 20 के नीचे है या नहीं। सो वी विल चेक, सिंपली यहाँ पर हम चेक करेंगे पोजीशन, इसको कॉपी पेस्ट, should be less than or equal to 20, number 20, राइट। और परसेंट ये हमने के लिए चेक किया, अब हम चेक करेंगे परसेंट डी के लिए भी। so this will check a great we can say a good buying momentum in the in our strategy for all the listed stocks। ओके, यहाँ पे जो जो हमने लिस्ट में स्टॉक्स यूज किया है उसके लिए यहाँ पर ये स्टॉक RSI के बेस पे चेक करेंगे। अब इसके साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स का एक एक लॉट बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने वहां पर लिस्ट सिलेक्ट किया था, यहाँ पर लिस्ट का नाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट। ये दिस शुड बी करंट मंथ, इट शुड बी लॉट्स और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ पर आपका एक लॉट आपका बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब यहाँ पर हम जैसे हमने बाय के लिए दिख रहे हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे सेल के लिए। तो इसके लिए वी विल ऐड वन न्यू सेट, दैट इज सेट 2। अब पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि इसके एग्जिट कंडीशंस हम क्या रख सकते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी आई विल जस्ट टेक we can say 5% or no, if it is futures we can say certain points like let's say LTP of the traded instrument
this should be our list. Okay, if it is greater than traded instrument, one comma one. Okay, so let's do it for 1%. So if it is greater than into, for 1% in Tradetron we have to use 1.01. ओके, सो जैसे यहाँ पर हम हमारा 1% सेटिस्फाई होगा, ट्रेड शुड बी एग्जिटेड. फाइन. सिमिलरली यहाँ पर हम अब क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे सेट 2 में सेल के लिए. तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर कॉपी क्लिक करूंगा, राइट, और पेस्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपने जैसे अभी क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आपको जाके क्रिएट करना है. ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ब्लू बटन पे, आपको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिखेगा लाइक दिस. So simply you can paste it over here. अब यहाँ पर हम सेल के लिए चेक कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर जो है हम कंडीशंस को बस हमें यहाँ पर ग्रेटर देन को लेस देन करना है और लेस देन को ग्रेटर देन करना है. ओके, रेस्ट ऑल कंडीशंस, नो वन कंडीशन विल बी डिफरेंट. जस्ट ओके. सो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जो ये हमारा अपर लिमिट है सेल के लिए, हमारे जो यहाँ पर है ये 80 के ऊपर है या नहीं, दोनों लाइंस. सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, is greater than equal to 80 or not. Okay, similarly तो अब यहाँ पर हम ये सेल के लिए चेक कर रहे हैं, राइट. So if this condition is getting satisfied, we will add one sell lot of future. So first we have to select the list name over here to add it in position builder. Sell. It should be lots 1 and this will be current month. Okay. So यहाँ पर हम यहाँ पर सेल करेंगे एक लॉट फ्यूचर का, अगर हमारे सेल कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो. और सिमिलरली यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी 1% का रखेंगे, सॉरी टारगेट 1% का रखेंगे. So it should be less than, for 1% it should be 0.99. ओके, तो हमारा ये 1% का टारगेट है. सिमिलरली हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं. और स्टॉप लॉस इट शुड बी LTP greater than traded instrument price into 1.005, that is 0.5%. सो यहाँ पर हमारा 0.5% का स्टॉप लॉस है और 1% का टारगेट है. यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम को हमें बस सेट नंबर 2 करना है कि भाई हमारा ये सेट 2 है, राइट. सो दिस शुड बी सेट नंबर 2. So like this we can create stop loss and target conditions. यहाँ पर भी हम stop loss रख सकते हैं. It should be an or whenever LTP is less than entry price
traded instrument entry price into number 0.99. Okay, so like this we can create a strategy on stock RSI. ठीक है, this should be in or और हम यहाँ पर PNL बेस्ड कंडीशंस भी रख सकते हैं यूनिवर्सल एग्जिट में, लाइक whenever PNL is let's say greater than number 1000 into multiplier. तो यहाँ पर हम ऐसे कंडीशंस रख सकते हैं और like this we can create strategy on stock RSI. Okay, so I will just explain as usual the advanced settings of the strategy. So ये प्राइस एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है, so इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस. ओके, सो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है मैं आई विल जस्ट मूव ऑन टू दिस रीएक्टिवेट ऑन एग्जिट आफ्टर सेटिंग्स. सो रीएक्टिवेट ये जो कंप्लीट एडवांस सेटिंग्स है ये एंटायर स्ट्रेटेजी लेवल पे वर्क करती है और ये सेट लेवल पे वर्क नहीं करती है. सो व्हाट डज दिस मीन इज, for example, you are setting the price execution settings as market price or whatever you are selecting over here, so it will be applicable for the entire strategy. Okay, not just for set 1, set 2, not specifically for any sets or any specific conditions. It will work on entire strategy. So if you are keeping it as a market price, then the entry till exit, or I can say till universal exit, the complete transactions will be done, or we can say trades will be done in market price only. ओके, सो ये है ट्रांचिंग साइज. सो ये है बेसिकली ट्रांचिंग, और यहाँ पर ट्रांचिंग साइज और ट्रांच टाइमिंग्स है. सो बेसिकली ये कब यूज होता है, सपोज आपके कंडीशन आपके स्ट्रेटेजी में 10 लॉट्स है, राइट. नाउ व्हाट यू वांट इज, आपको हर जो पूरा जो मतलब 10 लॉट्स है वो एट अ टाइम ट्रेड नहीं करना है, बट इंस्टेड आपको एक ट्रांच में ट्रेड करना है. जैसे पहले आपको 5 लॉट करना है, फिर आपको 5 लॉट करना है. So in that case, what you will do is you will select it as 50%, और यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम है 10 सेकेंड्स. आप यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो अगर हम यहाँ पर 10 सेकेंड्स ही रखते हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, आपके एंट्री या फिर आपके एग्जिट या यूनिवर्सल एग्जिट या रिपेयर जितने भी आपके ब्लॉक्स है, उनमें से पहले 5 लॉट ट्रेड होंगे, उसके बाद 10 सेकेंड बाद रिमेनिंग 10 लॉट्स जो है वो ट्रेड होंगे, राइट. सो दिस इज हाउ ट्रांचिंग वर्क्स. फिर ये ब्लॉक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. यू कैन असाइन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर योर स्ट्रेटेजी. सो ये एक्टिवेट एट है. यहाँ पर लेट्स से आपका पीएनएल जब 500 रीच करेगा तो आपको एक्टिवेट करना है, और विद इंक्रीज इन एवरी वी कैन से 10 रुपीज यू वांट टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस बाय 10 रुपीज. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, हर 10 रुपये पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 रुपीज से शिफ्ट होगा. तो पहले 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 500, पहले 500 पे एक्टिवेट होगा, यानी एट पीएनएल 500 वो 0 रहेगा, टीएसएल 0 रहेगा. जब 510 हो जाएगा तो वहां पर वो 10 रुपीज से टीएसएल 10 रुपीज हो जाएगा. ऐसे हर 10 रुपये पे 10 रुपये आपका बढ़ते जाएगा टीएसएल में. सो बेसिकली दिस इज चेक कंडीशंस एवरी. सो यहाँ पर आप व्हाट डज दिस मीन इज, सपोज एक एल्गोरिथम को कंडीशन चेक करने में, ये जनरल स्पेसिफिक रूल नहीं है कोई, ये आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो सपोज एक एल्गोरिथम को कंप्लीट कंडीशन साइकिल चेक करने के लिए लेट्स से 2 से 3 सेकंड लगते हैं. नाउ if you are selecting it as 1 minute, so after every one complete cycle, that is from entry till universal exit, it will wait for 1 minute. Okay, and then again it will check for the new conditions. So अगर आपके कंडीशंस उस लैप्स 1 मिनट के टाइम में अगर फॉल होते हैं तो वहां पर कंडीशंस टोटली इग्नोर हो जाएंगे और वहां पर आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. So to maximize the we can say chances of missing the to minimize the chances of missing the slippages or losing the trades, we can say we can use check continuously settings. So this is the capital required block. Generally this block is used for to give your subscribers an idea how much capital would be required for your strategy to run. सो ये उनके लिए स्पेसिफिकली यूजफुल है जिनकी स्ट्रेटेजीज मार्केट प्लेस पे लिस्ट करनी होती है, राइट.
ये है चेक कंडीशन, टेक ट्रेड्स एवरी। सो बेसिकली अवर एक्सचेंज ओपन्स एट 9:15। सो अगर यहाँ पर हमने 10 मिनट सिलेक्ट किया है, तो आफ्टर 10 मिनट्स दैट इज 9:25 आपके सारे कंडीशंस चेक होना स्टार्ट होंगे। 9:15 से 9:25 के बीच में अगर आपके कंडीशन सेटिस्फाई होते भी है तो वो ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि वो चेक ही नहीं हो रहे हैं। राइट। सो यहाँ पर अगर आपकी कंडीशंस, आपको मार्केट ओपन होते साथ अगर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आप 1 सेकेंड यूज कर सकते हो। Similarly, last condition check before exchange closed. So our exchange closes at 3:30. So if 10 minutes is selected, so 3:20 के बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, वेदर इट माइट बी पीएनएल एंट्री और एनीथिंग, कुछ भी चेक नहीं होगा, एग्जिट, यूनिवर्स एग्जिट, कुछ भी चेक नहीं होगा। तो to if you want to take trades or exit trades till the end of the market, you can select 1 second over here. ये रोल ओवर ऑन एक्सपायरी फीचर है। ऑन एक्सपायरी डे यहाँ पर आप आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस को रोल ओवर कर सकते हो नेक्स्ट मंथ पे। अभी हमने क्योंकि can someone please confirm if you can see my screen? Okay, thank you very much. There was a network error, I think. Okay, thank you, got it. So ये पब्लिक मार्केट प्लेस सेटिंग्स के लिए यूज होती है यहाँ पर ये सेटिंग्स। सो वी कैन सिलेक्ट पब्लिक स्ट्रेटेजी एज यस। ओके, एंड यू कैन क्लिक ऑन पब्लिश टू मार्केट प्लेस। यहाँ पर आप मंथली फिक्स्ड फी रख सकते हो आपके स्ट्रेटेजी के लिए, और यहाँ पर आप वेरिएबल फी रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट। ओके, और यहाँ पर आप इनवॉइस फ्रीक्वेंसी है, जनरली आपको इनवॉइस कितने इंटरवल्स पे जनरेट करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। Now let's say if you don't want to list your strategies on Tradetron's marketplace, rather you want to share the public link. Okay, I mean to say private link to your close group of people. So you can select it as subscribers with private link only to yes, और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है बस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्ट्रेटेजी। और आपको जो है यूआरएल जो है यहाँ पर माई स्ट्रेटेजीज में जाकर, बाय गोइंग टू दिस माई स्ट्रेटेजीज पेज, आपको ये यूआरएल शेयर करना है उस स्ट्रेटेजी का आपके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्ट्रेटेजीज ऑन ट्रेडट्रॉन। और आफ्टर क्रिएटिंग दिस स्ट्रेटेजी आई विल शो यू हाउ टू डिप्लॉय इट। सो लाइक दिस यू कैन गो ऑन माई स्ट्रेटेजीज पेज, you can see this, so you can click on this, and ये यूआरएल आप शेयर कर सकते हो आपके क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, अगर आपको प्राइवेटली शेयर करनी है स्ट्रेटेजी तो। ठीक है, सो नाउ वी विल सी हाउ टू डिप्लॉय इट। सो टू डिप्लॉय वी कैन क्लिक ऑन डिप्लॉय। यहाँ पर आप पेपर ट्रेड पे डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अगर आपको लाइव डिप्लॉय करना है तो यहाँ पर आपको आपका ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा, पहले लाइव ऑटो सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको ब्रोकर से आपको लिंक करना है तो यहाँ पर आप आपका ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन क्लिक ऑन डिप्लॉय। ओके, सो फॉर नाउ वी आई एम डिप्लॉइंग ऑन पेपर ट्रेड। जैसे ही अब यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा आपको स्ट्रेटेजी डिप्लॉयड सक्सेसफुली। सो यू कैन गो टू डिप्लॉयड पेज एंड चेक। ओके, सो लाइक दिस डिप्लॉयड पेज पे आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। ठीक है, so this is how you can create strategies on Tradetron. So if you have any queries regarding the same, please ask in the comment section, I mean Q&A section.
So one user Praveen is asking the buy sell order you placed at entry position block and the SL 1% order you placed in repair, will they go together in my account at broker? I mean, will I see four orders, two position orders and two SL limit orders in my trading account? So Praveen, right now I have placed the exit orders, sorry, I mean to say stop loss orders in the exit block. You can do it in the repair blocks as well. And if you're placing the SL limit order, then definitely with entry orders, your broker in your broker terminal, the SL orders will be placed. And as soon as the conditions are getting satisfied, it will trigger. So Prem is asking how we will connect subscriber. Let me just see. Yeah, how we will connect subscriber ID with my strategy. So I'm not clear with your question, Prem. Can you please elaborate on this? So Narayan is asking, even after taking a trade, will it continue to buy if the conditions are getting satisfied? So see, entry conditions are checked only once. Okay. So until it did not take an exit, it will not check the entry again. Okay. So if it is exiting, then only it will enter again. But if it is not exited, the entry will be checked only once. So Arijit is asking, I want a strategy that will take entry and check repair in loop. How to do this? So you can place your conditions in repair continuous block if you want to trade in a loop. Okay. So Bhaskar is asking, I generally do an ATM, OTM, and ITM CEPE selling in Nifty options. Will I be able to take a manual basket trade and keep specific stop loss for the entire trade? No, Bhaskar, you can't do that in Tradetron. In Tradetron, basket orders are not supported, first of all. And second, the stop loss conditions, or we can say exit conditions, will only be placed on the instruments which are placed from the Tradetron, not from the outside the Tradetron. So one user is asking, after exiting the strategy, how to start again the strategy. So I will just give you clarity about it. So see, in the exit, we are seeing there are two exits. One is the set specific exit and other one is the universal exit. Okay. So the status of the strategy. Okay. Now I will show you on the deployed page. Okay. So now you can see the status of the strategy as active over here, right? So this strategy will, the status will be changed to live entered when the positions are created. Fine. Now let's say if your strategy is satisfying the exit block, set specific exit, then the status will remain as live entered. So the status will be changed to exited once it has triggered the universal exit block. Okay. So if your status is showing as exited, then you can click on these three dots and scroll down, and here you will see an option for reactivate. Because we are in the active state right now, the reactivate button is not we can see here. Okay, so it will, you can see the reactivate button once the strategy is in exited block. Okay, so I hope it is clear to you. So to activate it automatically, reactivate it automatically, you can set the reactivate settings over here, reactivate on exit after. So once the universal exit has been triggered, you can set it as 2 minutes, or the minimum time is 2 minutes and the maximum time you can choose as per your requirement. So once you select this 2 minutes, it will automatically reactivate after 2 minutes from the exit to active state.
So Aditya is asking, what is the difference between set 1 and set 2 and so on? So see, in one of your strategies, as per your requirements, you can create multiple sets. Okay. So now our requirement was we have to check for the buying orders in one condition, and for selling we want to check for the another condition. So I have made multiple sets. Okay. So suppose if you only have the buy requirements, then you don't need the second set. So these sets can be used as per your requirements. If you are trading with multiple instruments, like suppose if you want to take positions in Nifty as well as in Bank Nifty, so you will require two sets, one for the Nifty and another one for the Bank Nifty. So like this, sets can be used. So Mr. Rao is asking how many sets can be created in TT. So there is no such restriction of creating particular sets in your strategy. Anyway, it is not recommended to use too many sets in one strategy, because definitely it will increase the latency of your strategy. Okay, so it's always better to keep it optimized to execute it faster. There is no such limit for creating a set. So Arijit is asking how to add Python code here. So Arijit, Python code can be added by the TT Con team only. So it is not accessible to general users. So you can share your Python code on support@Tradetron.tech. I am writing over here. So you can share your Python code over on this mail ID. Okay, and our team will check and get it done. So Arijit, stocks OI data is not available as of now. So OI data is only available for the index, that is Nifty and Bank Nifty. So Aditya, if you want to create short straddle in Nifty as well as Bank Nifty, you can create multiples. Either you can create multiple strategies or you can create multiple sets in one strategy itself. So both can be done. So some users are asking, what is live offline? So basically live offline is same as the paper trading. The only difference over here is, I will show you on the deployed page. See, so the only difference over here is this is the paper trading one. Okay, so you can't change the execution type of the paper trading. So if you want to deploy live, you have to again redeploy it from my strategies page. Okay, so but in case of live offline, as you can see here, it is live offline. So in live offline, you can change the execution time type to live auto or live auto one click or whatever as per your requirement. So the only difference is, from paper trading, execution can't be changed. You have to redeploy it again. But from live offline, you can change the execution type. Okay. So this is the only difference. Otherwise, paper trading and live offline both are same, one and the same thing. So I think that's it for the day. We are pretty much done with this webinar. I hope this was useful to learn. So yeah, cool. Happy weekend to everyone, and thanks for attending this webinar.